Assalamu alaikum. Madam, welcome. How are you? I am there. अल्हम्दुलिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं. थोड़ा सा जी नेट की वजह से लेट हो गया. जी बिल्कुल. Give me 1 minute. I am searching Dr. Rashid. If he is not there, I will start it myself. Dr. Naeem is also there. Our speakers are also there. We still waiting the Dean Saab. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Let's start our webinar. We are starting this webinar. We are continuing this webinar since very long time, since the pandemic of the COVID corona, with the main association, Pakistan Medical Association, and other collaboration with the Women Medical College, Abbottabad, and Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad. We all know that the almost pandemic in Pakistan and also all over the world due to the vaccine is now we are going to control it. But suddenly another hyper endemic we are looking about the this dengue fever, and this is our almost fourth. This is our fourth webinar. This is our fourth webinar, and I am in webinar. This is our fourth webinar, and we will continue it. And our speakers today, Professor Junaid Rashid, thank you very much for coming, joining, and speaker from and panelist Dean Saab. He is also very kind. He is joining with us since the pandemic. And Dr. Naeem and Professor Munir. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jazakumullah. Dr. Junaid Rashid साहब का मैं एक तारुफ करा दूं. डॉक्टर जुनैद रशीद साहब इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं. प्रोफेसर जुनैद रशीद साहब एक माने हुए पीडियाट्रिशियन है. प्रोफेसर जुनैद रशीद is the head of the Department of Pediatric Medicine, the Children Hospital University of Child Health Sciences, Lahore. Professor Junaid Rashid is a faculty member of Pediatric CPSP, member executive PPMA Punjab, graduate of Allama Iqbal Medical College, Medicine session 86-89. He has a wide experience of undergraduate and postgraduate teaching in institutions including the Allama Iqbal Medical College for the last 15 years. Professor Junaid also worked in the Fatima Jinnah Medical University, and Professor Junaid Rashid also worked in the Gujranwala Medical College, now working in the pediatric. Professor Junaid Rashid has another a big relation with me. His wife is a professor of pathology working in LGH Amiruddin Medical College. Now I will introduce another speaker, Dr. Naeem. Dr. Naeem is the youngest and a very active research man. I will say him the research man in Azad Jammu Kashmir Medical College. ये हमारी वो शम्मा है जो जल रही है तुंदो तेज हवाओं में बर्फानी मौसम के अंदर, लेकिन ये अपनी शम्मा को जलाए हुए हैं. प्रोफेसर Dr. Naeem is associate professor in CMH working with me and in my faculty, very honorable member. He is Ayubian. He is graduated 2004 and then fellowship in the FCPS and pediatric medicine in 2001 and joined my college before me 2011, and he has so many publications about more than 20 publications, national, international. We have another speaker is very kind to the Dean Saab, और डीन साहब का तारुफ जो है वो किसी का मोहताज नहीं है. बस इतना कहूँगा कि डीन साहब का जो DNA है वो मिलता जुलता है हमारे कश्मीर से, belong to Gambar. He is very kind teacher and he is very kind friend and he is
excellent pediatrician, and Professor Masood Saqib जो हैं, ना सिर्फ एक हमारे अच्छे उस्ताद हैं एंड एक अच्छे रिसर्चर हैं. ही आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कि मैं भी आजकल इन्हीं की खिदमत कर रहा हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में. एंड प्रोफेसर मसूद सादिक का एक हमने पिछला एक सेशन किया था पीडियाट्रिक्स का, एंड बहुत हिट किया. आई एम स्टिल रिसीविंग सो मेनी आंसर क्वेश्चंस. और आई नो प्रोफेसर मसूद सादिक बहुत मसरूफ आदमी है, लेकिन मैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जवाब दे देता. थैंक यू वेरी मच सर जॉइनिंग सर. अपना आप अपना म्यूट अनम्यूट कर दें. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for joining us, sir. Thank you very much for your kind introduction, मुलाजिम साहब. जी जुनैद रशीद साहब अपने आप शेयर कर दें अपनी चीज अपने इसको. जी जी अनम्यूट करें जुनैद साहब जी. थैंक यू वेरी मच. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. And thank you very much, Professor Mulazim Saab, for inviting me for this important talk. And I will try my level best to add value to whatever knowledge already people have. And I know there is a galaxy of learned people already on the forum and in this August audience. And I'm pretty sure that the knowledge which I will discuss will be a learning by me as well, because it will be a mutual discussion, and we'll try to gain from each other as much as possible. Now, my learning objective of this lecture would be: what is dengue fever, the prevalence and entomology, pathophysiology of dengue, clinical features, warning signs, convalescent phase, lab diagnosis, fluid management, monitoring, reporting, experience in Children's Hospital, and something about dengue vaccine. Before I start, let me tell you that Children's Hospital Lahore has been on the front line in the COVID era as well, and still doing the COVID job. We had a separate area for COVID in Children's Hospital, consisted of all our private rooms, and there were 40 bedded setup with all separate arrangements. And same we have done in dengue fever, because we started with 15 beds and now we have 75. And we had to convert one of our medical wards, a complete medical ward, into a dengue ward. We have to make a separate area in the emergency. And there were different services supporting us. I'll discuss it later on. And right now we are having around 65 patients in our hospital admitted. And there are like 65 are in the ward and 6 are in the ICU, medical ICU. So there are around 71 patients already admitted right now, pediatric patients in Children's Hospital Lahore. Now, the global prevalence of dengue fever, you all know that this is common in tropical and subtropical countries, and Pakistan is one of them. The map is showing that Pakistan, India, Far East, and Africa, they're all affected by dengue virus, except from the flavivirus group, which is the same as the yellow fever virus. I know you people all know about that. In Pakistan, the data has been, in 2011, the main epidemic, which turned out to be having 14,000 registered cases. I'm pretty sure there must be around 3 to 4 times more than that unregistered cases, and 300 documented deaths. And then the graph was a little less, and gradually, again, we had high incidence throughout 2019, around 24,547 children. And the epidemic and outbreak in 2021 is ongoing, and the data will be shared, obviously, when the data is completed. Now, it's it's known as a fatal vascular permeability disease, and it's common in children. In 1950s, when it started, it was considered to be a self-limited, simple febrile anthem with a little mortality. Then the immunopathogenesis was suggested after discovery of second infection-related severity. पहले इसका नहीं पता था कि second infection में severity करती, but later on it was discovered. It was found to grow more abundantly in cultures of peripheral blood monocytes from dengue virus immune humans. जिन patients में already human में हो चुका था, उनके monocytes में इसका abundant culture grow हुआ as compared to non-immune, जिससे पता चला कि there is an immunogenicity related. An antibody-dependent enhancement was discovered, and that was also because of the cross-linkage of IgE microbe, और ये जिसको पहली मर्तबा होता है उसकी antibodies बनती हैं. In the second attack, there is an antibody enhancement phenomena which leads to the typical leakage syndrome in dengue fever. Maternal dengue virus antibodies might protect newborns from dengue virus infection for several months.
ये भी discover हुआ कि माँ को during pregnancy, if the mother comes across dengue fever, she can transfer antibodies transplacentally to the child, and that can prevent infection for several months. But once the baby has antibodies, there is the first infection which occurs post-natal, your postpartum, your post-delivery can lead to a vascular permeability syndrome, but because that will be a second exposure of the newborn after the one which has been done through the mother during pregnancy. So the infant dengue vascular permeability syndrome can occur with the first dengue viral infection, if at all the mother has had it during pregnancy and transferred it to the baby. Now the vertical transmission. This point was in fact Professor Mulazam Hussain Bukhari in fact kindly asked me to talk a little about vertical transmission. And there are two types of vertical transmission. One is the vertical transmission of a dengue virus itself in the mosquito generations. That is, from one mosquito generation to the next mosquito generation in the den virus tree, the dengue virus can be transferred or transmitted for 7 generations. An adult mosquito has got a life of 14 to 21 days, and the larva, which can survive during the summer season and can occur again. In this case, the dengue virus can survive in the mosquito for around all throughout the summer season and regenerate, and throughout the transgenerational transmission. एक से दूसरी नस्ल जब मच्छरों की आएगी, the virus can be maintained in that for 5 to 7 generations. Now, the second one was from mother to child. There were different case reports. There are studies available that from mothers, the dengue virus is transferred vertically to the baby. There was one case report I read in which the mother had dengue fever 4 days before delivery, and the male baby had severe dengue with intracerebral bleed and death, and the virus was then virus 2. In another case report, the mother had an uneventful dengue in the last stage of her delivery, before delivery, last stage of her pregnancy, and her female infant had a thrombocytopenia and IgM antibodies. In a cohort study, there were 54 women were studied who had dengue fever in the last 15 days of pregnancy, and the rate of vertical transmission was 18.5, and there were 3 newborns who had warning signs. Similarly, there have been case reports regarding the transfer of dengue virus from breast milk as a possible source of transmission. So transplacental transfer of anti-dengue antibodies has also been documented. The prevalence of IgG antibodies in the maternal and cord blood samples was 95 to 98%, with high agreement between maternal cord pairs, that is a mother who was having dengue during pregnancy, in whatever stage, developing IgG antibodies, they were transferred to the babies, and the baby was saved, or rather than protected. Then this is the Aedes mosquito you all know. The Aedes aegypti has got a living within the home, and the albopictus is generally outside the home in the open environment. Then the life cycle of dengue virus, you all know it was like from aquatic life cycle. It survives in the clean water from eggs to larva, pupa, and adults, and it is around different days, 2 to 3 days, and around 7 days, a full dengue mosquito is formed. Aedes mosquito is formed. How does the mosquito transfer the disease? This is a known phenomenon. If a person who is having dengue fever is bitten by a mosquito, the mosquito Aedes aegypti or albopictus will take the infected virus and will transfer or by biting to the another person at the same place. Now, what is the pathophysiology? You all know that the pathophysiology of dengue virus is the plasma leak. And the plasma leak is mainly leads to the hemoconcentration and hypovolemia, increased sympathetic activity, and generalized vasoconstriction. I'll explain it further, in fact. There were different clinical features which are related to the different types of plasma leak pathophysiologies. Is when you have a vasoconstriction, the skin goes cold, clammy, with an increased capillary refill time, and there is a tachycardia, raised diastolic pressure, and narrow pulse pressure. The systolic pressure, in fact, remains the same because of vasoconstriction. The diastolic pressure is raised,
and the pulse pressure goes narrow as the leak is going on. Similarly, there is a decreased GFR because the blood is not being supplied to the kidneys and decreased urine output. In the gastrointestinal system, there is a liver damage and nausea, vomiting, abdominal pain, liver enzymes are raised. A tender hepatomegaly is a very important sign of leak. In CNS, obviously, you have a decreased cerebral perfusion, which leads to lethargy, restlessness, impaired consciousness. And in the respiratory system, there is lactic acidosis because of hypoxia and tissue damage. Why thrombocytopenia? It is because of low production of thrombocytes, increased consumption because of DIC, direct infection of platelets, as we all know, and the virus can kill platelets, and increased destruction of platelets by activated macrophages. Now, what are the different clinical features of dengue virus infection? The clinical features are, if a dengue virus infection happens to anybody, it can be asymptomatic or undifferentiated, or it may be symptomatic. The undifferentiated fever, the symptomatic one may be a simple dengue fever or dengue hemorrhagic fever. Now, one point is very important to be told and cleared here, that any person who is having dengue fever does not get dengue hemorrhagic fever because of a mismanagement of dengue fever. It's not a conversion from a dengue fever to a dengue hemorrhagic fever. A dengue fever is the one who is generally the first infection, and it will remain as dengue fever, and it was destined to be dengue fever to start with. And a dengue hemorrhagic fever was destined to be dengue hemorrhagic fever because it is generally after the second infection. Then once again, it can be without hemorrhage. Simple dengue fever can also come with simple gum bleed, sort of a mild hematuria, and sort of a little menorrhagia even. You cannot, it's not compulsory that if it is a bleed, it is always a dengue hemorrhagic fever. A simple dengue fever can come across with small bleed. Then they can come with unusual hemorrhages. There may be shock, and there may not be any shock, and the expanded dengue syndrome. Now, this is one of the dengue type in which the signs and symptoms are mainly of organopathy. And it's very difficult to, there are no other features of dengue fever, but the antibodies and the virus is detected, and the main clinical features of organopathy. Now, the clinical features preceded the incubation period. We all know it is 3 to 10 days. There are 3 phases. Now, majority of our children, almost 70 to 80%, what we are coming across in the probable phase. We have 3 types of categories. A child comes to Children's Hospital or any other place in Lahore, anywhere. We first suspect dengue fever on the basis of symptoms. Then we send a CBC. If the CBC is suggestive with a leukopenia and thrombocytopenia, leukopenia below 4,000 and the thrombocytopenia below 1 lakh, that is considered to be a probable case. Even if we don't have a leukopenia below 4,000, if there are warning signs, a tender hepatomegaly, restlessness, shock-like condition, a narrow pulse pressure, that is excessive vomiting, in fact, or heavy bleeding from any side, that is considered to be a confirmed or probable case till the time we receive a report. So we admit any probable case with us, and once a probable case is admitted, in the first 5 days, obviously it is confirmed by NS1 and later by antibodies. Most of the children, they go from the febrile phase to the recovery phase. But some of them who are having a second infection and who are having an antibody enhancement phenomena, they come across a critical phase in between a febrile and a convalescent phase. And let me tell you, all the children which came to us with a leaking, the parents were never knowing when this febrile phase, when this child had the previous infection. And the immune response, the antibodies which are formed, are typical only for the infecting serotype. Now, the fever, clinical features are fever from 2 to 10 days, essential criterion. Headache, let me tell you, you all must have come across children. I came across many children who were able to express, telling their parents, "Ke mama, mere sar mein bahut shadeed dard ho rahi." And the mother used to come with this complaint that this 4-year-old child is able to tell me that she's having severe pain in the head. Then retroorbital pain. This pain even can persist beyond dengue fever. My own family members, they had dengue fever and they're still saying after 1 week that the retroorbital pain is still persisting. Myalgias and a bone breaking, you know, the adventitia of the bones are involved, and that leads to the excessive bone pains. At times, they are so similar to those of the bone pains of oncology of leukemia. Arthrasia, rash, bone bleeding manifestations. Simple dengue fever can have epistaxis, hematemesis at all. Abdominal pain, decreased urine output. Now, this is very important. Any child coming to us, we are suspecting dengue, even if we are not sure, the shock is not yet clear
but a decreased urine output in the last 6 hours if the child has not passed urine, that should raise an alarm. And in infants, we had 2 children admitted with us, one of 5 months of age, the other of 10 months of age. The 10 months age child was the first child who came to Children's Hospital, and he was received from another private setup in full shock, and that he was straight away taken to the ICU, and mashallah, he survived. Day before yesterday, one of the mother coming to my clinic, she told me that her 42 days old child had dengue fever. And they are having dengue fever in their family otherwise as well. Sorry for this inconvenience. Sometimes No problem, sir. It dodges you, and with all our experience, yet we can have a problem with that. What are the clinical features as far as shock is concerned? Now you can have other organ involvement is concerned: hepatitis, cholecystitis, shock, hepatic failure, neurological manifestations. We had children with sort of a drowsiness who were in shock. We had children with raised enzyme. Now here, one point is very important. There is a reversal of SGOT, SGPT. You all be knowing, we came across liver reports showing an SGOT of 300 and something and an SGPT of 100 and something consistently. Then a pericholecystic edema. If the ultrasound tells you that there is a pericholecystic edema and there is a leak in the pleural cavity and abdominal cavity with mild pleural or moderate pleural effusion, whatever is the type or quantity, it is a confirmed leak. This is WHO classification of dengue fever. Now DHF, dengue hemorrhagic fever, has got type 1, type 2, type 3, type 4, depending upon the gravity of the bleed and the shock-like condition and the thrombocytopenia. Now these are the symptoms: simple dengue fever. You can have headache, muscle pain, rash, bleeding gum, and headache. Now this graph is one of the most important. I would stop here for a while and try to explain. We will repeat it when we come across other things. The febrile phase can go for 3 days, 4 days, 5 days. We had children for 6 days in febrile phase, even 7 at 1 or 2 children. Generally, a child can go into critical phase after the febrile phase. The fever rises like this during the febrile, and by the time fever goes down, the critical phase comes, if at all the child is not going to the recovery. And the critical phase is consisting of shock and bleeding. Then there is reabsorption of fluid in the recovery phase. एक बच्चा हमारे पास आ जाता है बुखार के साथ. Now it's very important to know it will be a sudden rise of fever. It is not a slow rise. This is very typically different from typhoid fever. We have to understand that in typhoid fever we have a slow rise of fever, and in dengue fever there's a sudden rise, 103, 104, even 105, and the children are having severe headache, and then the fever subsides. Like by day 3 or 4, the fever starts coming down. डॉक्टर साहब आज इसको थोड़ा सा वक्फा है, 100, 101 हो रहा है, and then suddenly there is a stoppage of fever. Now the time comes. So any child coming on day 3, उसको दाखिल कर. Because if you send somebody on day 3, if a child comes on day 4 within a shock phase or a leak phase, then it is difficult, and then it turns out to be a fault कि आपने बच्चे को टाइम पे दाखिल नहीं किया था. So any child who's in febrile phase on day 1, you might not admit, send a CBC, repeat a CBC on day 2. Sequential CBC का फायदा होता है, आपको serial platelets के कम होने का पता चलता है. If the serial platelets go down 30,000 per day से ज्यादा आपके fall कर रहे हैं, तो ये बच्चे का इम्कान है कि ये dengue fever है, और ये इसका इम्कान है कि he might bleed. And the hematocrit will be normal in the initial stage. जहां ये fever down होगा वहां ये fall करना, platelet count fall करना शुरू हो जाएगी, hematocrit rise करना शुरू हो जाएगा. We have seen पहले दिन platelet 201, 202, दूसरे दिन करीबन जाकर 130, 120, third day around 60, and then 20, 30, and then there is a leak evident during the rapid fall of platelet count. Now, what are the warning signs? Now, a child might not come with the fever. The fever might have settled. हमारे पास ऐसे बच्चे आए जिनका बुखार 2 दिन पहले, 1 दिन पहले टूट चुका था. You know, you had the message which has to be conveyed to the family is that generally, if a child is having fever for 3-4 days, the parents are in trouble. They are awake whole night, and the moment fever is okay, आपको फोन आता है, डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है, इसका बुखार टूट गया है. Now, this is to be told and warned to the parents that dengue, the fever subsiding is an alarm. बुखार टूटने के बाद आपका अलार्म शुरू होता है. And any child comes with persistent vomiting, severe abdominal pain, bleeding, epistaxis,
failed cold clammy extremities and urine output less than non-urine output in the last 4 to 6 hours has to be considered admitted जब तक कि आपको बाकी चीजें screen out नहीं हो जाती. So we have a febrile, critical or recovery, or we have a febrile or recovery straight away. Now, what is a recovery? Convalescent. A child, if it entered into recovery, you have good appetite, there is a rash. I'll show you the picture. And many children we receive with typical pruritus. So there was a fever for 5 days, and now the child is having a rash with pruritus, and the child is stable. We had a child with bradycardia. She was a 16-year-old girl, and during recovery phase, she had a typical bradycardia. We had a cardiac consultation. It was a sinus bradycardia to end with. And finally, after 48 hours, the bradycardia automatically set. Similarly, the hematocrit will be stabilized, especially in a child which was previously in leak, and the WBC and platelet count will be risen. Now, this is a typical rash of diffuse red rash with islands of white and a mix of redness. ये हम जो बच्चे आते हैं on day 1, उनको आप एक छोटा सा हमारा DIAC टाइप है नोट सा कि आप बच्चे को घर में आप उसको नेट में रखें और बाकियों को लोशन लगाएं और पैरासिटामोल इस्तेमाल करें, ब्रूफेन डिस्प्रीन को अवॉइड करें, 24 घंटे बाद CBC कराएं. One point to be noted: every child should not be lying into the net. Net means a child only during the febrile phase. Now the investigations. Mulazim Saab will definitely endorse me. He's much more experienced in this component. मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं. He's a pathologist and this is his field. Now, for the first 5 days, बल्कि typically 4 days, we have almost 100% आपको मिल जाता है primary infection में dengue NS1. और जब आप जाते हैं डे 4 के बाद डे 5, 6 पे तो थोड़ा सा आपकी परसेंटेज फॉल करती है. जो 75 is around डे 5, 6 पे आती है. So there is a possibility that the fever was settling, you sent an NS1 और उसका NS1 negative आ गया. It's a non-structural protein and it's a hallmark of flavivirus. Yellow virus में भी इस तरह के होते हैं और ये आपके early phase में आता है. Now this is a typical picture in a primary dengue. The first episode of dengue you see, there is a viremia, and you don't have any IgG antibodies in the primary dengue, and this is the IgM antibody जो फीवर के बाद कहीं 7वें दिन के बाद अगर आपने IgM antibody का राइज देखे थे डे 7, तो अगर बुखार टूट भी गया हुआ है और आप NS1 नहीं करा सकते, आपको प्लेटलेट काउंट से शक पड़ रहा है कि डेंगू फीवर है, तो डे 7 पे जाके IgM करवाइए. डे 5 और 6 पे आपको करवाएंगे तो there is a possibility that you'll have to repeat it on day 7. You might not get a proper figure. And in secondary dengue, now you see the IgG antibodies were right there previously. And then there is an antibody enhancement phenomenon, and the previous antibody level is an increase. And you don't have enough IgM in secondary infection and does not stay long in secondary infection. Now, this was one of the main topics, fluid management of dengue fever. Now, the fluid management, we do not do fluid management in asymptomatic, in undifferentiated or simple dengue fevers. Yes, during the febrile phase, the child needs fluid at times, the child needs oral or injectable paracetamol, but the fluid management is basically for the non-shock or shock dengue. And fluid management is not exactly the febrile phase. Giving a maintenance fluid does not mean the fluid management. If a child is unable to take and is being given some fluid, it's not a fluid management. Management for a critical phase, which lasts for 24 to 48 hours. Now, the plasma leak is the hallmark, and there are other conditions in which we lose fluid. For example, in diarrhea, the fluid is lost outside the body, and there is no third space collection of fluid. In dengue, you all know, this must have been repeated before as well in the previous lectures, that there is a third space loss into the pleural and peritoneal cavity, and we are having around the clock, almost twice a day, ultrasounds are going on in Children's Hospital. There is a dedicated radiology team who's coming on regularly for chest and abdominal ultrasound to detect and anticipate and monitor the fluid loss in the third space. The main target is do not over-transfuse, do not under-transfuse. Transfuse means fluid. And it is a meticulous monitoring. Once the leak starts, you have to monitor from the ml to ml, jitna आप fluid दे रहे हैं, इसको urine output से monitor करना है. अब बच्चा आपके पास आ गया, you've anticipated the leak start हो गई है, आपने अल्ट्रासाउंड को पिक कर लिया है कि इस बच्चे को pericardial pericystic cholecystic edema है, then infusion, there's a mild pleural or pericardial effusion, abdominal ascites. Then you will start monitoring. There are different charts. Government has given charts हैं. Febrile phase का चार्ट, और अगर आपको बुखार में बच्चा मिलेगा, आप वो चार्ट अप्लाई करते हैं जिसमें 4 hourly बच्चे को फीवर को और PBC को फॉलो किया जाता है, 6 hourly फॉलो किया जाता है. स्पेशली डे 3 आ जाए
तो आप 6 आवरली शुरू कर दें, क्योंकि कहीं भी बच्चे के प्लेटलेट सडनली फॉल कर सकते हैं। एंड इफ देयर इज अ क्रिटिकल फेज, तो वहां टिपिकल क्रिटिकल फेज का चार्ट है जिसमें पल्स प्रेशर, यूरिन आउटपुट, हार्ट रेट, कैपिलरी रिफिल टाइम, ये तमाम चीजें फ्लूइड के रेट के साथ साथ आवरली बेसिस पे, इवन एट टाइम 15 मिनट बेसिस पे फॉलो करना पड़ता है। नाउ अमाउंट ऑफ फ्लूइड, the target here is what amount of fluid is to be taken. Now here's the fluid quota. An adult comes to us. अब adult का weight generally 50 kg से beyond होता है, चाहे वो 80 किलो हो या 90 किलो हो या 100 किलो हो, the fluid will be calculated for 50 kg. Adult में हम 50 kg से ज्यादा नहीं जाते, but the principle is that you calculate the ideal weight of the child. For example, a 4-year-old child is generally 16 kg weight, उसका ideal weight 16 किलो है, तो आप कहते हैं भी 16, अगर वो बच्चा 25 किलो से आ गया या 20 किलो से 4 years से आ गया, you will not give it the fluid, calculate the fluid according to 25 kg, you'll calculate and give according to the lower version, ideal weight and present weight, whichever is lower. अगर एक बच्चा 16 किलो का होना चाहिए, वो 12 किलो के वजन से आया है, तो उसको 12 किलो का फ्लूइड जाएगा। अगर एक 16 किलो का होना चाहिए और वो 20 किलो के वजन से आया, तो उसको 16 किलो का वजन जाएगा, whichever is lower. So main target is no over transfusion. Now this fluid which is calculated, for example, आपने fluid calculate किया, we know that the leak phase is 48 hours. We will not give this fluid in 24 hours. जो हम calculate करेंगे ये over 48 hours दिया जाएगा। वो कैलकुलेट आप करेंगे अपने 24 आवर्स के हिसाब का और उसको देंगे 48 आवर्स। दिस इज वन वे यू कैन कैलकुलेट द वेट। आप परसेंटेज सीरीज चार्ट्स हैं, इस पे आप प्लॉट करें, बच्चे के वेट का आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आइडियल वेट से नीचे है कि आइडियल के अंदर है, जो लोअर हो अप्लाई करें। देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज, लेस देन 1 ईयर आप ये फार्मूला लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल एक 6 महीने का बच्चा है, तो 6 + 9 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, तो उसका अंदाजन वेट 7.5। अगर आप वेट मशीन नहीं है, यू कैन गेट दिस वेट विद द फार्मूला एप्लीकेशन। 1 to 7 years का ये फार्मूला, एक 6 साल का बच्चा है उसको 2 से ज़रब दें, 12 years + 8 20, तो 6 साल का बच्चा 20 किलो का होगा। अगर एक 7 years के बियॉन्ड का बच्चा उसको 3 से ज़रब दे दें, फॉर एग्जांपल, यू मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यू विल फाइंड अ रफ वेट। नाउ फ्लूइड कोटा फॉर एडल्ट, फॉर आपने ये फ्लूइड कोटा जो कैलकुलेट करना है एडल्ट्स में। अब फर्स्ट यू कैलकुलेट द मेंटेनेंस, एम इज फॉर मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल, फॉर द फर्स्ट 10 kg आपने 1 लीटर किया, 100 ml per kg. For the next 10 kg 50 ml per kg, and for the remaining you do it 20 ml per kilogram. और आपने ये कैलकुलेट कर लिया, फॉर एग्जांपल 600 ml आप 50 kg के लिए कर रहे हैं ना, तो 1000, 500, 1500 एंड 600 जो अगले 30 kg के लिए आपने 20 से सिर्फ दिया उसको, तो वो 600 ml बना, एंड द फ्लूइड टर्न्ड आउट टू बी 2100 ml प्लस 5% ऑफ बॉडी वेट। वंस अगेन 50 आपने लिया उसका बॉडी वेट, उसको 5 से सिर्फ दिया, तो आपने 2500 फ्लूइड आपने निकाल कर ये टोटल जमा किया। So max fluid which can be given to any adult is 4600 ml whatsoever. इससे ज्यादा फ्लूइड चाहे वो 100 किलो का हो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, and that will be given in 48 hours. Now this is for children. For example, you have a child of 22 kilograms. Now 22 kilogram means 100 ml for the first 10 kg, 50 ml per kg for the next 10 kg, and 20 ml per kg for the next 2 kilograms. So this is 1540. और अब आप उसका 5% का मतलब होगा कि 22 को आप 50 से सिर्फ देंगे तो 1100 ml आपको फ्लूइड मिलेगा, एंड फ्लूइड विल टर्न आउट टू बी 2640। इस फ्लूइड को आप उसको 48 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर रेट। व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लूइड? प्रेफर्ड फ्लूइड इज नॉर्मल saline. In younger children you can give 5% dextrose with 0.9% saline, and in infants you give dextrose half saline, because you see too much saline is not good for children's kidney, and they can't handle it, and dextrose required to avoid hypoglycemia in children less than 1 year. Now what fluid option or has to be given? What are the clinical types of shock? For example, एक बच्चा आपके पास आ गया, अब ये वो दरमियान वाले फेज में आया है, when the child is leaking, आपने उसका पल्स ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया, इट वाज 100/75, इसका मतलब उसका पल्स प्रेशर 25 था। जो 25 या 30 के अंदर अंदर वाला पल्स प्रेशर है उसको आप कॉम्पेंसेटेड शॉक देंगे, एंड यू हैव टू गिव, body is compensated for the shock, compensating for the shock with tachycardia and rising of systolic diastolic pressure, and the pulse pressure is getting narrowing, and उसका जो है CRT prolong होगा और यूरिन आउटपुट उसका 0.5 ml per kg per hour तक फॉल कर जाएगा।
एक बच्चा आया है, उसका पल्स प्रेशर बनता है 15, the blood pressure is 90/75. I saw another child, we were doing the round, and during the round, a child who was in the leak phase, हमारे सामने देखते ही देखते वो बच्चे का एकदम कलर पेल होना शुरू हुआ, and the blood pressure which was recorded was 60/50. It was only a pulse pressure of 10, and in time the boluses were given, and mashallah the child was back to normal within no time. So the pulse pressure has to be very important. जो भी आपके क्लिनिक पे बच्चा है जिसका बुखार टूट चुका, उसका आते ही ब्लड प्रेशर देख के, उसके यूरिन आउटपुट का सवाल पूछ के, उसका कैपिलरी रिफाइल टाइम देख के, उसका हार्ट रेट जज करके हमने डिटेक्ट करना है कि ये कॉम्पेंसेटेड में है या डीकॉम्पेंसेटेड में है, और ये जरूरी नहीं है कि वो एक दोनों में से फेज में आएगा. If a child might be in leak but not be in shock of any type, the pulse pressure is good. हमारे पास बच्चे आते हैं जिनका लीक का एविडेंस होता है, तो पल्स प्रेशर इज 40, और वो थ्रू आउट द लीक उनका इतना कम लीक रहता है कि वो पल्स प्रेशर 40 ही रहता है. एंड द लीक कैन बी, देन टाइप ऑफ फ्लूइड्स की हम बात कर रहे थे, कोलॉइड्स. अब इनका क्या यूज है? मैंने शॉक के बाद कोलॉइड्स की इसलिए बात की कि आपको कोलॉइड्स का यूज वहां, यू नीड इट वेयर you are already short of your fluid. For example, you calculate a given amount of fluid. The child went to shock. You had to give boluses. Too much of fluid was given, and now very less fluid is left for a very longer time. अभी लीक का टाइम आपके 22 घंटे रहता है और आपके पास 300 ml फ्लूइड देने को रह गया. तो उस सूरत हाल में you will avoid crystalloids and you will give Dextran. We have been given. हमने कल रात भी एक बच्चा शॉक बनाया था, had to be given Dextran. We gave another Dextran in ICU. हमारे Dextran इस्तेमाल हो रहा है, Dextran 40. And generally हमें कल रात वाले को तो एक ही देना पड़ा था, लेकिन आप 3 डोजेस भी दे सकते हैं 24 hours में. It has got a high osmolality. It stays within the vascular volume and can avoid leak. जो लीक होती है वो आपका फ्लूइड प्लस प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है, प्रोटीन होने की वजह से ही दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है. Similarly, आप now one important point before you give Dextran, for example, you are anticipating to give Dextran, तो आप उस बच्चे का ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग पहले करवा लीजिए, because giving a Dextran and then, for example, बच्चा ब्लीड में जाता है तो Dextran might interfere with the grouping and cross matching. Now this is the typical graph. एक बच्चा जो हमारे पास वो वाले 48 आवर्स जो दरमियान में थे क्रिटिकल फेज में, उसमें आ गया. तो दिस इज एन एंटिसिपेटेड हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन. ये हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है कि बच्चे की जब लीक स्टार्ट होगी तो पहले 6 घंटे में अंदाजन इतनी होगी, अगले 6 में इतनी होगी, अगले. दिस इज अ हाइपोथेटिकल. यू कैन हैव अ चाइल्ड थ्रू आउट इन 1.5 ml per kg per hour 48 के 48 घंटे. You can have a child who went from 1.5 to 3, back to 1.5, back to 5, back to 1.35, back to 10. Zigzag, flat, gradual increase, यहाँ से ही fall कर जाए. 24 hours के अंदर ही सारा लीक करते हैं. You can have a leak of full volume within 24 hours. So it's not compulsory कि आप एक बच्चे को चुना के. The most important point here is that when the child comes to you in the clinic or the hospital or the emergency and you feel that the child is leaking, तो पहला सवाल जानना जरूरी है कि इसको बुखार टूटा कब. और ये अंदाजा लगाना, आप उससे सवाल पूछते तो डॉक्टर साहब कल रात 3 बजे बुखार टूटा था. दैट मीन्स कि आपने अगले 48 घंटे के लिए फ्लूइड कैलकुलेट करना है और अगले 48 आवर्स उसको देना है. चुनाचे वहां से आपने कैलकुलेट करना है कि 1.5 ml हो, 3 ml हो, 5 ml हो वगैरह. Now for example, you can receive a child in shock. Somebody came to you, हमारे पास बच्चे आए हैं जो आए ही शॉक में थे. शॉक का मतलब ये कि they have already gone through the first 24 hours और वो यहाँ खड़े हैं और वो ऑलरेडी अपना फ्लूइड लूज कर चुके हैं. तो ये बच्चे को जब आप बोलसिस दे लेंगे तो इसका मतलब ये कि ये ऑलरेडी उसके पीक पे है, तो यहाँ से ग्रेजुअली आप उसका फ्लूइड नीचे कम करते जाएंगे. Now this diagram, this picture is important. Now there are compensated and decompensated shock. I told you that a child who comes with a pulse pressure which is more than 20, less than 30, a urine output which is 0.5 ml per kg per hour. जब हम शॉक में बच्चे को फ्लूइड देना शुरू करते हैं तो हमारी टीम जो वहां मॉनिटर कर रही होती है वो कांस्टेंट उसका यूरिन आउटपुट देखती है. नीचे यूरिन बैग लगा होता है, साथ उसके ब्यूरेट लटका होता है. ब्यूरेट में उसका यूरिन आउटपुट साथ एक घंटे बाद देखा जा रहा होता है कि इस 1 घंटे में इसने कितना यूरिन पास किया. If it is more than 1 ml per kg per hour, तो फ्लूइड की स्पीड कम. If it is less than 0.5 ml per kg per hour, तो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा. अगर 0.5 और 1 के दरमियान उसका थ्रू आउट लीक जहां जहां रहेगा, जिस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आप दे रहे हैं, मसलन आप उसको
यहाँ पे है बच्चा 1.5 ml पर kg पर आवर, और यहाँ उसका यूरिन आउटपुट जो था वो फ्लूइड 1.5 जा रहा है, यूरिन आउटपुट 0.5 से 1 के दरमियान है, तो आप उसको वहां मेंटेन करें। अगर वो 1 से ज्यादा हो गया, आप 1.5 से भी नीचे चले जाए। अगर 0.5 ml पर kg पर आवर से यूरिन उसका नीचे चला गया तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो इट हैज टू बी अ क्लोज मॉनिटरिंग, एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन गोइंग इनटू अ zigzag leak, not a uniform leak. तो once you receive a child, एक compensated shock में आया, आपने एक बोलस दे दिया, और ये बोलस आपने 2 घंटे में देना। The difference is, अगर decompensated में था less than 20, तो ये बोलस as fast as possible, आपको 2 IV लाइन भी लेनी पड़ सकती। After giving bolus, you see for improvement. If there is an improvement, तो आप चले जाइए फिर दोबारा इस शॉक से निकल आया, इंप्रूवमेंट हो गई, अब आपने उसको 5 ml पर kg पर आवर, फिर 3 ml पर kg पर आवर, फिर आप ग्रेजुअली यूरिन आउटपुट की मदद से देखते जाइए। कोशिश ये करनी है कि हम फ्लूइड उतना दें, अगर बोलस भी देना है तो वी विल गिव बोलस टिल द टाइम द पल्सेस आर पैल्पेबल। अगर आप बोलस दे रहे हैं एंड यू फील कि पल्सेस बहुत अच्छी आ गई हैं, गुड वॉल्यूम आ गई हैं, तो यू विल नॉट नीड कि आप उसको बोलस को पूरा कंटिन्यू करें, उसके बाद आप उसको स्लो फ्लूइड पे जा सकते हैं। एंड इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट, जो कि बड़ा कॉमन होता है, अगर डीकॉम्पेंसेटेड शॉक है, 20 ml per kg push might not lead to an improvement, you can give another 10 ml per kg push. Now this point is so important because हमारे पास बच्चे ओवरलोड में आए। In some periphery, a child was already given more fluid, considering that the child is shocked. उनको अंदाजा नहीं था, जब बच्चा रिसीव हुआ, you have to understand whatever fluid is being given will go into the fluid cavity. आप देते जाएंगे, उसकी लीक चैनल खुले हुए हैं, ग्लाइकोकेलेक्स उसका लीक कर रहा है, उसके वेसल्स का, कैपिलरी का, जो डालते जाएंगे वो प्लूरा और पेरिकार्डियम को, सॉरी, उसमें अब्डोमेन में जाता रहेगा, और वो सारे का सारा वापस आएगा, और फिर बाद में फ्लूइड ओवरलोड से आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। If at all the child is not improving after the second, आपने 2 दे दिए पुशेस, then you have to see कि आपके पास कितना फ्लूइड रह गया। यहाँ पर उसको डेक्स्ट्रान भी दे सकते हैं। इसका हेमाटोक्रिट आपको बार-बार चेक करना है बिफोर एंड आफ्टर द पुश, और आप देखेंगे कि अगर हेमाटोक्रिट उसका राइज करता जा रहा, यहाँ पे कैसे पता चलेगा? एक एविडेंस यूरिन आउटपुट का है, हेमाटोक्रिट विल गो मोर देन 20%। मतलब एक बच्चा 36 हेमाटोक्रिट बेसलाइन पे आया और उसका 3.6 10%, 3.10 उसका 43 हेमाटोक्रिट हो गया, 20%। अगर उसका 40 हो गया या 39.6 हो गया तो 10%। तो इवन 10% हेमाटोक्रिट इज अ लीक, एंड 20% मींस कि बहुत रैपिड लीक हो रही है। वी सॉ चिल्ड्रन जिसका एक दिन पहले 36 था, अगले दिन 49 था। और प्लीज इसको जो है प्लेटलेट के साथ हमेशा मत जोड़िए। वी हैव सीन अ सडन फॉल इन प्लेटलेट्स, एक दिन पहले 190, अगले दिन 50, बच्चा टोटल शॉक। So you have to be very vigilant when there is a last day of fever. और इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी इंडिकेशंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू डिड अ हेमाटोक्रिट एंड यू फाउंड दैट द हेमाटोक्रिट हैज अ 10 पॉइंट्स फॉल, आपने कहा ये तो बच्चा लीक में है, इसका तो हीमो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, हेमाटोक्रिट ऊपर जाना चाहिए। व्हाई इज द चाइल्ड हैड अ हेमाटोक्रिट ऑफ 40 previously and a 30 now, and the child is still in with the cold peripheries and pale? That means there has been some concealed hemorrhage somewhere. कोई हेमाटोमेसिस उसको आना शुरू हो जाएगा, हो सकता है उसको कहीं से मलीना डेवलप हो जाए, ज्यादातर गट हेमरेज होती है। और इसमें आपको भी पैक सेल देने पड़ सकते हैं, एक से ज्यादा मर्तबा देने पड़ सकते हैं। एवरी फ्लूइड बोलस 20 ml, 10 ml डेक्स्ट्रान is subtracted from the total fluid quota. Blood transfusion is not subtracted from the quota because वो गट में करेगी, वो बाहर निकल जाएगी। जो बाकी हुए थे वो थर्ड स्पेस में लीक किए थे। ABCS, now this is important, refractory shock में बच्चे आते हैं तो ABCS जो ये DIAC की गाइडलाइंस में है कि you can have acidosis, you can have bleeding, you can have hypoglycemia, you can have hypocalcemia. We came across children जिनको hypoglycemia था, infants में, हमारा जो infant था उसको hypoglycemia होता था, हमारा बच्चे शॉक में गए, उनको कैल्शियम उनका फॉल कर रहा था। तो we at times if you feel कि आपका बच्चा शॉक में जा रहा है तो कैटेकोलामीन रेजिस्टेंट शॉक बड़ी जल्दी डेवलप होता है डेंगू में। If you don't intervene in time, you have very less time, almost 4 to 6 hours, that the child, if remains in a refractory, in a decompensated shock 4 to 6 hours, he will go into the catecholamine resistant shock. अब inotropic support देंगे भी तो वो रिकवर नहीं करेगा, बल्कि vasoconstriction बढ़ेगी और टिश्यू हाइपॉक्सिया और डैमेज पड़ेगी। और मॉनिटरिंग इज सो क्विक, उसका एक अलग चार्ट है जो 15-15 मिनट बाद भी हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। Now these are the dengue reporting forms. या आप आया बच्चा, आप आउटडोर में बैठे हैं, आप इमरजेंसी में बैठे हैं, आपने रिपोर्ट कर दिया। These are the admission forms. ये आपने बच्चे का एडमिशन क्राइटेरिया है, ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया है। Now this is the febrile, वो जो पहले 3 दिन में बच्चा आया, देखिए it is written day 1, day 2, day 3.
इफ यू रिसीव अ चाइल्ड ऑन डे 3, इसको यहाँ से फिल करना शुरू। इसका मतलब ये है कि एवरी 6 आवर्ली इस बच्चे का हम ब्लड प्रेशर, हेमाटोक्रिट ये चीजें देख रहे हैं, और हम नोट करें कि 3 पे आ गया और 3 to 4 and around 4 द चाइल्ड विल गो इनटू लीक, एंड दिस इज द लीक चार्ट। अब इस बच्चे को लीक होगी, दिस इज अ क्रिटिकल फेस मॉनिटरिंग चार्ट इन एवरी, ये फ्लूइड 10 ml per kg per hour, 5 ml, 8 ml, 7, ये जो आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जहां आप करेंगे वहां टिक होगा, उसके पैरेलल नीचे उस वक्त का यूरिन आउटपुट, उस वक्त का पल्स प्रेशर, उस वक्त की टाइम, उस वक्त की उसकी जो है हेमाटोक्रिट, वो साथ साथ होगी। और ये चार्ट एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, और एक एक्स एक्सिस पे टाइम 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 फिल होता जाएगा। नाउ दिस इज at the end of presentation मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस चिल्ड्रन हॉस्पिटल का शेयर करूंगा आपसे। वी हैड टू मेक अ न्यू वार्ड, हमने एक पूरा डिपार्टमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल को दिया। इसमें हमने सेपरेट बेस बनाए, हमारे कन्वालेसेंट फेज का बे है, फेब्राइल फेज का बे है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, और हमें 3 उस वार्ड में देयर आर 8 rooms, we had to convert 3 out of them in a, because yesterday there were 23 children in leak out of the 65 who were admitted. So we started from 15 beds, now there are 75 beds, and there are 6 separate ventilated beds in the ICU, 1 pediatric medicine unit converted, and we have separate bays and a separate room in the emergency. We also prepared a separate room, कमरे हमारा emergency में पूरा room है जहाँ पूरी टीम बैठी हुई है। जो बच्चा वहां पे आता है वहां रिसीव होके इन टाइम मैनेज होके वो वार्ड में शिफ्ट होता है। CBC facility machine is lying within the dengue ward, round the clock consultant coverage, कंसल्टेंट सुबह शाम राउंड करते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार इन पर्सन शाम रात हर वक्त दस्तयाब होते हैं, एंड राउंड द क्लॉक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सर्विसेज। नाउ द डेंगू वैक्सीन, इस मौजू पे अक्सर बात होती रहती है कि जी डेंगू वैक्सीन के मुतालिक आई एम श्योर पिछली सिटिंग्स में भी हुई होंगी, एंड यू ऑल नो दैट देयर आर 3 डेंगू वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, और उसमें जिनमें आपके फेज 3 क्लिनिकल टेस्टिंग हो चुकी हुई है। जो आपकी मेन अप्रूव हुई है डेंगू वैक्सीन जो एडल्ट्स के लिए हुई है, और बच्चों में ये आपके जो ये है डेंगू वैक्सीन और टैक 003, ये मोलेकुलर कैमरास हैं, और इसमें लाइक उन्होंने उसको येलो फीवर के नॉन स्ट्रक्चरल जीन के साथ उसको कंबाइन किया, इनके 4 वायरसेस 10, 1, 2, 3, 4 के स्ट्रक्चरल जीन्स को उनके नॉन स्ट्रक्चरल जीन के साथ कंबाइन करके एक सनोफी की है, टेकीडा की है। एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन टेट्रावैलेंट बीइंग प्रोसेस है, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है इनका भी ट्रायल चल रहा है, एंड इट कंटेन्स म्यूटेजनाइज्ड डेन 1, 3 and 4 and then 4 and 2 कैमरास। ये इसको लाइव एटेन्यूएटेड बना रहे हैं, ये भी ट्रायल में है। जो फेज 3 ट्रायल जो डेंगू वैक्सीन के चल रहा है, ये प्रोवाइड इट इज रिकमेंडेड कि आप इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अभी नहीं हुई बच्चों में खैर, लेकिन अगर आपने बच्चों को देना हो तो ये सीरो पॉजिटिव बच्चों में आप को दे सकते हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी सीरो पॉजिटिव हैं बट सेंसिटाइज सीरो नेगेटिव चिल्ड्रन फॉर रिस्क इनहैंस्ड डिजीज ड्यूरिंग ब्रेक थ्रू। इसलिए हम इस मौजू पे भी पाकिस्तान में इसलिए बात नहीं करें कि यहाँ ब्रेक थ्रू बहुत ज्यादा है और आप उसको पहले से दी हो वैक्सीन दैट कैन बी अ फर्स्ट सोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू द चाइल्ड मेमोरी टी सेल, एंड दैट कैन लीड टू अ सीरो, बच्चा जो है सेकंड जब उसको फर्स्ट अटैक होगा तो वो उसमें सेकंड अटैक के तौर पे आएगा और उसको लीक स्टार्ट हो सकती है अगर उसको पहले वैक्सीन लगी हो। Dengue vaccine contains no virus NS1, while NIH जो ये इनकी है टेट्रावेलेंट जो लाइव एटेन्यूएट है, इसमें NS1 उसकी प्रोटीन भी साथ है, और इसके ये प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स चल रहे हैं, और इसके करीबन 35,000 डेंगू वैक्सीन के हुए हैं बच्चों में 2 से 16 साल तक। अभी जो उनकी फिलहाल स्टडी जो उन्होंने की थी जिसके एंड पे दे डिक्लेयर्ड इट कि अभी अगर दिया भी तो ये 9 years और अबव बच्चों को दिया जाए। Now, thank you for listening patiently, or I'm sure कि Thank you very much. मैं अपनी जो ऑगस्ट ऑडियंस है उसको थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर सकूं, तो most welcome for the advice of our panelists. Any questions? We'll start question answer after a few minutes of Dr. Naeem and then Professor Masood Sadiq, and then there will be question answer. Professor Dr. Naeem, what you can add, what are you doing in Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad? Dr. Naeem, unmute करें। Thank you very much, Professor Junaid, for such a comprehensive talk. Till now in Muzaffarabad, in our hospital in CMH, we have 6-bedded dengue ward, and during throughout the month of October, we had almost 100% bed occupancy. But in last week of October, number of cases have declined, and
Almost all cases which we managed, they were of simple dengue fever. None of them went into dengue shock syndrome or dengue hemorrhagic fever. And I think only less than 2% cases we were able to give them sportive platelet transfusion. So as far as our experience is concerned in Muzaffarabad, we received almost those cases which were routinely cases of simple dengue fever. Thank you, Dr. Naeem. This lecture is being recorded for the final year MBBS. Now I will request Professor Masood Sadiq, Dean of the University. Thank you very much, sir. Thank you, Professor Mulazam. I think Junaid has given such a comprehensive talk. There is not much left to say, but as you know, I'm primarily a pediatric cardiologist. So whenever it comes to any pediatric context, I think it's important to highlight the relevant cardiac manifestations of that particular illness. And in that context, I would really like to add on that if you look at the literature, and I think we have seen at our institution as well, although dengue patients are primarily being managed by our pediatric team, led by Professor Junaid, Professor Attia, and Professor Javed. But I think a certain percentage of these patients actually do get cardiac manifestations. And a couple of things which are very crucial in terms of monitoring these patients. One of them is the presence of bradycardia. If you see any child who develops bradycardia, I think that should be taken as a sign of cardiac involvement and should be taken very seriously, because these patients then can decompensate very quickly. And if you look at the literature, one of the major manifestations of cardiac involvement is bradycardia. It is usually a sinus bradycardia. Although other cardiac arrhythmias have also been described in dengue fever, like you can get even heart blocks in these patients. Second important consideration in these patients is the presence of myocardial involvement. When these patients go into dengue leak syndrome or dengue shock syndrome, not uncommonly they will have not only raised cardiac enzymes, CKMB, but they actually have evidence of cardiac dysfunction on echocardiography. So if you perform echocardiogram in these patients, you will see that these patients might be having significant systolic or diastolic ventricular dysfunction. Some of them actually may have small amount of pericardial effusion as well, and that's part of the dengue leak syndrome as well. So it's an important consideration when you are actually dealing with these patients who have severe dengue, both dengue leak syndrome and dengue with shock, or some people call it secondary dengue as well, because they tend to be more sicker than the primary dengue syndrome. The question would be when to actually go for an ECG or echocardiogram in these patients. I think ECG is something you would always do if you find any evidence of tachy or bradycardia. I think you should get a 12-lead ECG and make sure that you are not missing an evolving heart block, a significant bradycardia, or some sort of an arrhythmia. I think echo is more controversial because most centers who actually deal with these patients do not have that facility. We are very lucky at Children's Hospital that we have a cardiology team and an on-call person around the clock who can come in and do an echocardiogram. So most of the time, this will be a clinical evaluation when you would look at the child and make sure that the child does not have signs of ventricular dysfunction. And if so, that needs to be treated properly. But I think if the facilities exist and if your child is going down in terms of cardiogenic shock or shock per se in a dengue situation, you should get an echocardiogram that will facilitate your management. Because if you have a diastolic dysfunction with adequate filling, the management line will be different. If you have a significant systolic dysfunction, although myocarditis per se is relatively rare, then the management strategy will be slightly different. I think that's all I would add in terms of cardiac manifestations. First question I will ask from Professor Junaid, and then second question I will ask from Professor Masood Sadiq. Professor Masood Sadiq, what is the complication of overload of this fluid? The people who do not monitor and they are treating their patients in the villages and other things.
What is the complication of overload of this fluid in children? Sir. On the lighter note, I was one of the very few first victims of dengue when dengue came in this country, and nobody at that time really had a very good grasp on the subject. And I still remember I was overloaded personally and got very sick. God Almighty has been very kind, and I'm still alive. But I think it's something which I think people have to be very, very careful in terms of evaluating these patients. And I think Junaid has very comprehensively given us a fluid protocol, and I would ask Junaid to give that again as how we should be treating these patients, and when to give fluid, how much fluid should be given, and of course what to do with fluid overload. Over to Junaid. Fluid overload, we have children. For example, there was a child who came to our emergency who had already received 1 liter of fluid before, and the total quota was around 2 liters, which was calculated, and half of the fluid had been given as a bolus somewhere else. So this child, once treated, initially had a little overload in the form of pulmonary edema and diuresis. And when the recovery phase and reabsorption phase came, the vascular volume, which was out in the pleural and abdominal cavity, it came back into the volume, and the pulse pressure became wider. There were diuresis, there was a little pulmonary edema on the X-ray showing, and that was managed by a very controlled Lasix infusion, along with a little fluid being given, along with the monitoring of blood pressure, and the child came out of it. So we can come across, I'm repeating again that once, to avoid overload, we have to be vigilant. पहली बात, ये कौन से स्टेज पे आ रहा है, कितनी देर हो चुकी है इसको लीक स्टार्ट हुए हुए, कितना फ्लूइड पीछे, अगर आपको आईवी नहीं मिला, इफ यू आस्क अ चाइल्ड, फॉर एग्जांपल आज सुबह एक बच्चा आया, उसकी माँ ने कहा जी कल सुबह से बुखार टूटा हुआ है, इसका मतलब हम किसी इस फेज के आसपास हो सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे गुजर गए। अब आपने उससे पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने आई रिमेंबर इसने 2 गिलास पानी पिया था, 3 गिलास हमने अनार का जूस पिला दिया था। यू विल कैलकुलेट दैट फ्लूइड, और आप अपने टोटल फ्लूइड कोटा में से माइनस करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि बच्चा हमारे पास किस कंडीशन में आया हुआ है, शॉक में आया है, डीकॉम्पेंसेट। अगर तो वो बेचारा पीछे से पीता आया है तो काफी इम्कान है कि वो डीकॉम्पेंसेट नहीं हुआ होगा, लेकिन दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि वो एक्स्ट्रा पी आया, और आपके पास जो टोटल फ्लूइड बचा है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट हैज ऑलरेडी बीन गिवन, then that is the time to avoid overload and give dextran rather than giving crystalloid. You have to give colloid so that you can avoid overload. And number 2, regarding एक छोटा सा comment है regarding platelet transfusion. In fact, we had children with us. Same, he was asking about the platelet. What is the indication of platelet transfusion? There is technically no indication of platelet transfusion as per guidelines. We have had children with platelet to the level lowest about 4,000. हमारे पास 4,000, 3,000 के बच्चे रहे, और उनमें 15-20 तो बहुत ही कॉमन है, 10, 15, 20 तो इस वक्त भी बेशुमार पड़े, but we did not give any platelet transfusion. And the indication is only if at all a child is in a shock and there is like bleeding going on, you have already given 1 or 2 pints of blood, और यू आर कंसिडरिंग एनी जस्ट उसका हीमोडायनामिक स्टेबल हो जाए तो आप देते हैं प्लेट ट्रांसफ्यूजन। ये भी बच्चा जो शॉक में गया, जिसका हेमाटोक्रिट बहुत ज्यादा सडन ड्रॉप हुआ, जो ब्लीड किया, जिसमें पैक सेल लगाने पड़े, उसकी ऑन गोइंग ब्लीड रोकने के लिए, या इफ एट ऑल अ डेंगी चाइल्ड कम्स विद अपेंडिसाइटिस, फॉर एग्जांपल एक बच्चे को कोइंसिडेंस है, कोमॉर्बिडिटी है, या डेंगी हुआ है, कोई सर्जरी करनी, बाजू टूट गई, कुछ हो गया, and now the surgeon says I want a given level of platelets for a given surgery for a given period of time, मैंने 1.5 घंटे की सर्जरी करनी है, मुझे उसमें प्लेटलेट ऊंचे चाहिए, that is probably 1 or 2 relative indication जहां हम प्लेटलेट उसको कुछ दे सकते हैं, because this is also being literature में है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एक तो ओवरलोड में ऐड करती है, दूसरा it can enhance the cytokine release, तो इससे वो जो बच्चे में वो फिनोमेना चल रहा होता है रैपिड लीक का, साइटोकाइन रिलीज का, वो एनहांस हो सकता है। तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, नॉट गिविंग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स टू आवर चिल्ड्रन। One of the question from Dr. Ahmed, my student, he is asking, can we give the dextran to the patient who is going to show the renal compromise? देखिए, रीनल कॉम्प्रोमाइज इसका टेम्पररी होता है, वी डोंट हैव इनफ टाइम। फॉर एग्जांपल एक बच्चा हमारे पास आया है, अगर वो ऑलरेडी रीनल फेलियर में है
तो फिर हम स्टार्च एज एन ऑप्शन ले सकते हैं रादर देन डेक्स्ट्रॉन। लेकिन अगर एक बच्चा रीनल, फॉर एग्जांपल डायलिसिस वाला बच्चा आता है, अब उस बच्चे को हीमोडायलिसिस चल रही है, क्रॉनिक किडनी डिजीज चल रही है, उसमें तो फ्लूइड ओवरलोड होने के बाद वैसे ही इम्कानात ज्यादा हैं, तो उस बच्चे में हो सकता है कि आपको पैरेलल उसको डायलाइज भी करना पड़े, उसका वो जो है यूरिया क्रिएटिनिन कम करना, उसका फ्लूइड जो ओवरलोड है उसको साथ साथ डायूरीज करना, और उसके साथ उसको डेंगू को मैनेज करना। डेक्स्ट्रॉन आप अगर फुल ऑब्वियसली एस्टैब्लिश्ड रीनल फेलियर है तो आप नहीं देंगे। हिमैक्सल आप दे सकते हैं उसके प्लेस में। यू कैन गिव एल्ब्यूमिन, अगर आपको कोई भी, यानी कि कोई भी ऐसा फ्लूइड जो, कोई भी ऐसा सॉल्यूट जो फ्लूइड को रिटेन कर ले ब्लड के अंदर, वो दिया जा सकता है। तो दे आर स्टार्च, एल्ब्यूमिन, हिमैक्सल एंड डेक्स्ट्रॉन। जनरली क्योंकि हमारे पास बच्चे जो नॉर्मल हेल्दी आ रहे हैं, इस वक्त सारे बच्चे जो आ रहे हैं देयर अराउंड 8, 10, 9, 12 ईयर्स, और ज्यादा एडोलेसेंट या ग्रोन अप या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, तो दे आर अदरवाइज नॉर्मल। वो ड्यूरिंग शॉक अगर उनका रीनल कॉम्प्रोमाइज होता भी है तो दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर परफ्यूजन, एंड इफ यू गिव फ्लूइड तो वो जो एक्यूट किडनी इंजरी थोड़ी सी हुई भी होती है वो रिवर्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन है फ्रॉम द बिलाल शायद, व्हाट इफ ए चाइल्ड प्रेजेंट्स in compensated shock still after 12th of the critical phase, but has already been given 1.5 liter more fluid than the quota? What should be the protocol then? Hematocrit was 50 and not falling. देखिए generally speaking, if the child was given 1.5, technically ना it's more theoretical scenario. प्रैक्टिकली एक बच्चे को जब आप साथ साथ फ्लूइड दे रहे होते हैं तो वो कॉम्पेंसेटेड शॉक में कम जाता है। वो जनरली ये जरूर होता है कि उसका लीक बढ़ता जाए, लेकिन वो शॉक में इसलिए नहीं आ पा रहा होता कि मुस्तकिल फ्लूइड उसको जा रहा होता है। येट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इतना ज्यादा लीक हुआ कि जो मर्जी आपने दिया वो सारे का सारा लीक कर गया, इसका प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। एंड ऑब्वियसली अगर 1.5 लीटर ज्यादा जा चुका हुआ है तो देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गिव डेक्स्ट्रॉन्स ओनली, और आप उसको किसी भी तरीके से, बिकॉज उस वक्त पहला काम है जिंदगी बचाना। वी कैन नॉट अफोर्ड अ चाइल्ड टू डाई विद शॉक रादर देन टू डाई विद ओवरलोड। ओवरलोड को हम फिर और तरीके से मैनेज कर लेंगे किसी भी तरीके से, उसमें फिर आप बच्चे को वेंटिलेट रख सकते हैं, उसको थोड़ा सा लैसिस इन्फ्यूजन देके उसके हार्ट को थोड़ा सपोर्ट देके बाद में लुक आफ्टर किया जा सकता है। बट अ डेथ विद शॉक के आपने लीक में नहीं बच्चे को पकड़ा है, ज्यादा रिस्की होगी। तो वी हैव टू सेव अ चाइल्ड, आइनोट्रोपिक सपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, साथ आप उसको जो है वो ऑल्दो इट्स अ रेयर पॉसिबिलिटी जो आपने सिनेरियो बताया कि उसका इतना ज्यादा फ्लूइड एक्स्ट्रा मिल गया और फिर भी वो डीकॉम्पेंसेट शॉक में रहा, तो उसमें डेक्सान एज अ फ्लूइड, आइनोट्रोपिक सपोर्ट साथ, और जैसे ही बच्चा बेहतर होना शुरू होगा हम उसको, अगर वो ओवरलोड में जाता भी है तो फिर लैसिक्स इन्फ्यूजन along with the controlled blood pressure monitoring along with echo. We had a child with mild myocardial dysfunction. इसका इको हुआ था एक बच्चे का, हल्का सा मायोकार्डियल डिस्फंक्शन आया था, बच्चा शॉक में था। एक रिकमेंडेशन आई है फ्रॉम प्रोफेसर मुनीर, डेंगू वैक्सीन इज रिकमेंडेड एज 9 to 16 year recommended. Lab confirmed cases of the dengue fever and the living area where the dengue is common, but it is very important to check if the IgG is present, then it is not recommended. आपने कहा था कि there are 2 common tests in the first 4 days, that is the NS1, it is non-specific. It will be positive for all type genotype 1, 2, 3, 4. And the other test is we usually do not recommend, that is the PCR. Very rarely we are doing, only we want to do a research in labs. And the third test is then IgM, it remains for 90 days. And then after that is the IgG. Another test we do not recommend, nucleic acid amplification test. So mainly it is the physician, your consultants, you recommend these things on the our blood complete examination, our renal test and other tests. Thank you very much. If anybody एक छोटा सा नोट आपकी इजाजत से। Yes sir. I was in a meeting in Secretariat day before yesterday. Right now all 4 strains of dengue are in the market. PCR गवर्नमेंट कर रही है, IPH में, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में, और जो जहां से उन्होंने सैंपल लिए हैं वही जो जिनके NS, आइडियल जो होता है कि PCR का सैंपल उस प्लाज्मा में से दिया जाता है जो फेब्राइल फेज में हो, यानी NS1 का सैंपल के वक्त में किसी का PCR आपने करवाना है तो फर्स्ट 4 डेज में जब उसका फीवर हाई है, उसका NS1 पॉजिटिव है, उसी सैंपल को आप संभाल के
उसका NS1 पॉजिटिव आ जाए तो PCR के भिजवाया जाए। और इस वक्त देयर आर ऑल डेन 1 2 3 4 चारों स्ट्रेन सर्कुलेट कर रही हैं। एक और क्वेश्चन है प्रोफेसर मसूद सादिक आपके लिए। वन ऑफ द स्टूडेंट is asking, sir, what do you mean by the secondary dengue? I'm sorry if I use that term. I think people have been using that term. I think it's the second episode of dengue. That's what I meant, actually, primary dengue and secondary dengue. But I think this is not a very appropriate term to use. I think terms like dengue with leak or dengue with shock are more appropriate terms to be used. But I think Junaid has just highlighted on his slide as what exactly the secondary dengue means. Okay, Junaid, you want to? हाँ जी सर, इसमें देखें once again in a one- primary dengue अगर आप देखिए dynamics, primary dengue means first attack, simple incubation period, fever, ये एंटीबॉडी शुरू हुई हैं आपके कहने का मतलब है प्राइमरी डेंगू जो पहले हो चुका और पहला secondary अटैक दूसरी दफा हो चुका। ओके जी सर, एग्जैक्टली ये सेकेंडरी डेंगू है। ओके ओके, जिसमें आईजीजी एंटीबॉडीज पहले से देखिए प्राइमरी में आईजीजी एंटीबॉडीज अभी नहीं बनेगी होता। और प्राइमरी सेकेंडरी में में आईजीजी एंटीबॉडीज ये पीछे से चली आ रही हैं और ये एनहांस होंगी। ओके, एक क्वेश्चन जो मेरे लिए और सर यहाँ एक छोटा सा नोट और है, एक गिवन टाइम, यानी अब इस वक्त डेंगू की एपिसोड चल रही है ना सबको, तो जिसको डेंगू इस वक्त होगा ड्यूरिंग दिस गिवन पैंडेमिक, यानी जो इस आउटब्रेक में उसको दूसरा अटैक नहीं होगा, उसको इतनी सिक्योरिटी मिलेगी आईजीजी एंटीबॉडी से कि सेकंड अटैक ड्यूरिंग द सेम, यानी एक बंदा मुझे सवाल पूछे कि सर इसी दफा में मुझे 2 दफा डेंगू हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे रिलेटेड है अबाउट द प्लेटलेट। वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग व्हाट इज मेगा प्लेटलेट। मेगा प्लेटलेट, अगर आपके पास मशीन नहीं है ना प्लाज्मा फेरिसिस की, तो यू कलेक्ट द 6 पेशेंट्स और जिनका 200 से ज्यादा प्लेटलेट होने चाहिए। एक यूनिट जो है हमें इम्प्रूव करता है 5000 से 10,000 यूनिट पर लीटर। लेकिन आजकल मशीनें बड़ी अच्छी आ रही हैं। आई होप इन you are showing Professor Junaid in your lab is working there. Even you can take the mega unit from one single patient. Single donor. But sir, if the machine is not available, like in other areas, like in Tehsil headquarter and district headquarter and other headquarter, we collect usually olden days 6 बंदों को लेते थे और वो भी जब एक लगता था तो वो दूसरा खत्म हो जाता था, यानी तो even a single dose you can improve 30,000 to 70,000. As you told, we rarely use the platelet. It is only the you maintain the fluid. Thank you very much. इसमें हमारी जो डीएग में डिस्कस हुआ था हमारी जो एडल्ट मेडिसिन में मेयो में लास्ट ईयर एक पेशेंट 0 प्लेटलेट के साथ मैनेज था। तो अभी बल्कि मेरे सामने जस्ट आखिरी 2 बातें, मेरा एक डाटा हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी मेरे सामने आया है। हमने वी हैव सस्पेक्टेड अराउंड 1600 चिल्ड्रन, आउट ऑफ विच अराउंड 165 आर कंफर्म्ड और बाकी प्रोबेबल भी करीबन 300 सवा 300 से ऊपर है। तो ये पूरे आप समझिए कि ये पूरे साल का तो है, लेकिन ये ज्यादा जो है ये 1 सितंबर से लेकर अब तक 1600 बच्चे सस्पेक्ट हो चुके और करीबन कोई 165 के अराउंड कंफर्म हो चुके। Thank you very much. If anybody asks the question, otherwise I will ask the Professor Salma Kundi. She is president of PMA, and thank to all. Say the thank to all the speakers, Professor Junaid and Professor Masood, and all other speaker. Professor Salma Kundi. Professor Mulazim Hussain. Ji sir. Ji Manaim. I have shared a link of one of the research article which was published in Pediatric in Review. And anyone who is interested in getting more details about dengue management, he can copy this link, and it is shared in message. Upload in our website, and if they will ask the question, then you can answer on it. We will upload on our AJKMC website. Thank you. Okay, thank you. Professor Salma Kundi, can you close? Assalamu alaikum. Thank you so much, Professor Mulazim Saab. आपने मुझे बोलने का मौका दिया. First of all, I'll thank you, Professor Mulazim Saab, because you're the man behind the gun for this webinar. It's a great webinar, and listening to all this today, being a non-clinician, I was really, really thrilled because this is something which is saving lives. Allah aap sabko iska ajr de. My special thanks to everybody who's attending, to our panelists, great Professor Masood Sadiq Saab,
Professor Naeem Ahmed Saab, and my special thanks to the speaker, Professor Junaid Rashid Saab. It was a wonderful lecture. For a lay person who's not a clinician like myself, I gained such a lot. In fact, when we download this, I'll give it to all the GPs all over Aptabad, and I will good. share it with every pediatrician who is Thank you so around much. here. Thank you so much. Thank you for a great talk. Thank you And so Allah much, bless madam. Now I everyone. will leave for the Kashmir. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Thank you very much, Allah Hafiz. Masood Saab. Thank you very much, Junaid Really, Rashid. thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Naeem. आपने भी time निकाला, and everybody, thank you very much. If you ask the question, we will upload on our website, on PMA website and our personal website. You can ask the question. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, मेरे पापा. Allah Hafiz. Allah Hafiz.